recording on कर देता हूँ. So welcome in my class. Today we are going to be understand the fundamental of chemistry. But when we start the chemistry, so first of all we have to know what is mean by chemistry. Anybody can you tell me what is the chemistry? How can we define? कोई बोल सकता है केमिस्ट्री क्या होती है? कैसे डिफाइन करते हैं हम केमिस्ट्री को? हेलो एनीबॉडी, एनीवन, कोई भी बोल सकता है. व्हाट इज केमिस्ट्री? हेलो. Study of various reactions and compounds. Reaction and compound. Study of reaction and compound. Okay, very good. और कोई? It is a branch of science which deals with the study of organic and inorganic chemistry is called as chemistry. Okay, okay, very good. और क्या कह सकते हैं? केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? ओके, चलो ठीक है. आप लोगों का 12 में हुआ है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है. सो आर यू कंफर्ट इन इंग्लिश? Yes sir. Yes sir. ठीक है, ठीक है. तो बीच में थोड़ा थोड़ा हिंदी भी बोलते रहेंगे क्योंकि कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है तो समझ में आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. So let's begin with the definition of chemistry. Chemistry is a branch of science, no doubt. Okay, but what we study in the chemistry, we are studying about the composition, then properties, then reaction, characteristic of the molecule, and we study about this whole thing in the branch of science that is known as to be chemistry. Okay, मतलब हम केमिकल का ही स्टडी नहीं करते तो उसका कंपोजिशन क्या है, वो कैसे बना है, what is the component of this molecule, what is the composition of this molecule, which are the element present in the molecule. So we are starting from this study. Okay, so what is the component of this molecule, then how it form the bond, how they attach to each other, and uska bonding, how the bonding in this molecule. Okay, then their property means how they behave, like physically and chemically, how they behave, what type of property it will be shown, what is the solubility is there, what is reactivity is there. Okay, what the bond length, what is the dielectric constant, what is dipole moment. Okay, solubility. So these all things are come into the property. Okay, so these are the properties. And next one thing is very important, that is the reaction. Okay, everyone we know that the reaction. So again question is there, what is meant by reaction? Yes, anybody can answer what is meant by reaction? Beta, are you from first year microbiology group? तुम्ही लेक्चर नहीं जॉइन केलं? Okay, join lecture fastly. Okay, so what is reaction? Anyone can tell me what is reaction? Hello, reaction क्या होती है, किसे कहते हैं हम reaction? महंगे रिएक्शन काय होते? कटोले, शर्मा. हाँ, चंदन गोड़े, व्हाट इज रिएक्शन? जिंगर. ओके, तो एक बात समझ लो बेटा, यहाँ पे मैं एक थोड़ा कहता हूँ आप लोगों को कि जब आप मेरा लेक्चर ज्वाइन करते हो तो एज अ फ्रेंडली, विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस, है ना, जो भी आपको क्वेश्चन आता है या जो भी आपको क्वेरीज आती है या जो भी आपको आंसर देना होता है, आप फ्रीली आंसर दीजिए. ओके, ऐसा नहीं कहना कि ये मतलब छोटा सा क्वेश्चन है, ये कैसे यहाँ पे पुट अप करूँ, किस तरह से यहाँ पे मैं पूछूं, है ना, या सर आंसर पूछ रहे हैं मैं कैसे उसका आंसर दूं, है ना. ये कोई भी एजिटेशन आपके मन में नहीं रखना है. फ्रैंकली, एज अ this is your class, your teacher, your classmate, so everyone is a component of this class, is your family. Okay, so in a family you are freely talk with any person, so similarly in the class you can freely communicate with any person in this class. Okay, you communicate with your classmate and also with me, you can communicate freely. Okay, तो आपको फ्रीली कोई भी आंसर अगर पूछते हैं यहाँ पे, तो जो आपको आता है
नॉट नेसेसरी कि हर चीज आपको, जैसे अभी डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री हमने पढ़ा, तो आप सबको डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री तो नहीं पता होती है, बट कुछ लोगों को थोड़ा पार्ट पता होता है। कुछ लोग कहेंगे कि रिएक्शन की स्टडी होती है, कुछ लोग कहेंगे केमिकल का स्टडी होते हैं, या कुछ लोग कहेंगे कि कंपोजिशन का स्टडी होते हैं, है ना। कुछ लोग कहेंगे प्रॉपर्टी का स्टडी होता है, या कुछ लोग कहेंगे रिएक्शन का स्टडी होता है। नो वन इज रॉन्ग, कोई भी इसमें रॉन्ग नहीं है। कंप्लीटली कंपोजिशन जब बना देते हैं, मींस कंपैरेटिवली सबको जब हम मिला लेते हैं, तो दिस ऑल फ्रैगमेंट मेरा डेफिनेशन एक इंट्रोडक्टरी. ओके, सो म्हणून काय करायचं की आपल्याला काहीही क्वेश्चन असेल किंवा काही आपल्याला सांगायचं असेल तर फ्रँकली आपल्या क्लासमध्ये बोलायचं. ओके, ठीक आहे, हे सांगायचं होतं मला. यू विल बी फॉलो दिस ऑल इंस्ट्रक्शन गिवन बाय मी. ओके, सो क्वेश्चन इज रिएक्शन. रिएक्शन किसे कहते हैं? हाउ कैन यू डिफाइन टू रिएक्शन? तो देखो रिएक्शन क्या होती है, अलग अलग तरीके से हम डिफाइन करते हैं. देखो क्या होता है कि ए को बी से मिलाने के बाद में सी एज अ प्रोडक्ट मिल जाता है, दिस इज कॉल्ड एज रिएक्शन. ओके, ये सिंपल से डेफिनेशन हम बोल देते हैं. और क्या होता है कि रिएक्टेंट जो होते हैं वो रिएक्ट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट एंड इट विल बी कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट. हेलो, हाँ हम ये बोला ना. मी तुम्हाला मॅडम प्रोग्राम हे झालं. Reaction. Okay, so one another definition for the reaction is there when bond making and breaking. Okay, simply हम ऐसा भी कहते हैं कि reactant convert into the product, this is called as to be the reaction. Reactant convert into the product, ये simple सी definition है reactant की. और ये reactant जो है ये product में किस तरह से convert होते हैं, ये अगर हम देखेंगे तो there are two different level in when you are studying the chemistry. जब हम केमिस्ट्री का स्टडी करते हैं तो देयर आर टू डिफरेंट लेवल ऑन विच यू हैव टू गिव योर आंसर दैट इज टू बी द वेरी वेरी ऑथेंटिक. ओके, मींस वो दो लेवल कौन सी होती है? एक होती है इलेक्ट्रॉनिक लेवल एंड देन सेकंड वन इज द ऑर्बिटल लेवल. ठीक है, अब ऑर्बिटल लेवल पे हम कुछ आंसर देते हैं, ये ऑथेंटिक होता है, इसके आगे कुछ नहीं होता. ऑर्बिटल लेवल और ऑर्बिटल लेवल के भी आगे जो होता है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे जाके जब आंसरिंग करते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा ऑथेंटिक होता है, इट मोर स्पेसिफिक, इसके आगे कुछ नहीं है ना. तो इन दो लेवल पे जाके आपको आंसर देने की आदत करनी है. ओके, तो ये कब होगा? व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस ऑल फंडामेंटल ऑफ द केमिस्ट्री, देन यू विल रीच टू द ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो ये करने के लिए आपको हर लेक्चर को अटेंड करना होगा, हर कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना होगा. And also you have to apply this all concept. Okay, also you have to discuss this all concept in your classmate, in your group, and also with me, and then you will be very prompt, you will be expert in the chemistry, definitely, I'm sure. तो ये जो reaction होती है, reactant convert into the product, but there is a process to converting this reactant to product. So there is a conversion is occur due to the मेकिंग एंड ब्रेकिंग अ बॉन्ड, है ना. जो रिएक्टेंट है उसमें कुछ बॉन्ड बन जाते हैं, नए बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं, या कुछ नए पुराने बॉन्ड जो होते हैं, मतलब जो भी बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, तब जाके नए बॉन्ड उसमें फॉर्म होते हैं. ठीक है, तो जब हम बॉन्ड लेवल पे, बॉन्ड लेवल अगर बोलते हैं, हम कहते हैं, तो इट बिकम टू बी द ऑर्बिटल लेवल एंड इलेक्ट्रॉनिक लेवल, क्योंकि बॉन्ड फॉर्म occurred due to the overlapping of atomic orbital, and sharing of electrons. Okay, the final level is orbital level and electronic level. So on this two level, when you go and give your answer, that is become to be more authentic. So when you see to reaction and how to define the reaction, so there is a reactant and this reactant convert into the product. ठीक है, तो रिएक्टेंट जो है इसमें कुछ बॉन्ड जो होते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं, है ना. ये ए जो है रिएक्टेंट, ये कन्वर्ट होता है बी में. ठीक है, एक रिएक्टेंट देखा हमने, तो ये का जो भी स्ट्रक्चर होगा, इस स्ट्रक्चर में
इसके कुछ बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएंगे और कुछ बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे, तो हम उसे कहेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकडाउन, ठीक है। बॉन्ड का एक तो ब्रेकडाउन होगा, रिएक्शन होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको और आगे हम देखेंगे कि टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री इट इज नेसेसरी टू नो, है ना, व्हाट इज इट, केमिस्ट्री क्या है ये हमने देखा है। देन व्हाई टू स्टडी, देन सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई टू स्टडी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री किस लिए स्टडी करना चाहिए है। तो इसके बारे में जब हम सोचते हैं तो वी नो दैट आवर डिपार्टमेंट इज गोइंग टू रन वन add-on course on chemistry in everyday life. Okay, so everybody you know that, and there is a word is title of this course is chemistry in everyday life. Okay, so that is the answer of this question, why to study the chemistry. Okay, so chemistry का study क्यों करना चाहिए, so chemistry in everyday life, because we know that chemistry is everywhere, inside the body and outside the body. You can see everywhere there is a chemistry. Okay, everywhere there is a molecule, everywhere there is an atom, everywhere there is an electron. Okay, and they are continuously change their position, continuously change their energy, continuously change their structure. Okay, so because of that, the bond making and breaking is a simultaneously, it's continuously process is going on, and because of that you will see that there is a number of changes. So these are all changes only because of the chemistry. I'm talking with you, this is also, there is chemistry, okay, because there is the energy is required for the talking. Okay, this is one of the components for the talking process, is require the energy, and energy come from the food. But food is food means this is the primary reactant for the production of energy, is the primary product reactant, and then the food is digest, and this all digestion process, and finally it convert into the glucose molecule. So you know that is glucose. Glucose is a chemical compound, is an organic compound is there. Okay, so these all things are related to the chemistry. Okay, you think on my talk. Okay, you are thinking whatever you see in this picture. So this all process goes through the chemistry. Okay, then everyday life, when you woke up in the morning, you start the brushing. So in brushing, there is a toothpaste. The toothpaste is nothing but the chemical compound is there. There is a various compound molecule in the paste. Also, you use the toothbrush. Brush is there. The brush is a plastic polymer. Okay, this polymer is there. This is the part of the chemistry. Then you also drink the water. This water is also part of chemistry. H2O. Okay, so everywhere, pharmaceutical, there is chemistry. Industrial, there is chemistry. Cosmetic, there is chemistry. In a food, okay, making food, okay, to make a decorate to the food, and a synthetic color you use for the different color giving to the foods. Okay, then for the preservation of the food, you use the different preservative. Okay, sodium benzoate is one of the examples. So there is chemistry also. You use the lemon in food in the your diet. So food, all fruits having the different compounds. Okay, so this is also part of chemistry. You ride the bike, a vehicle, any vehicle. So there is a petrol, diesel. Okay, petrol, diesel. The octane molecule is there. Isooctane molecule is there. Okay, so that molecule is fragmented. This molecule is decomposed into CO2 and H2 after the burning. Okay, it provides the energy to the bike for the riding, and then it converts into CO2 and H2 and so many other compounds as byproducts. So this is the chemistry also there. And we are made up by the number of cells. Okay, and in cell everywhere there is a DNA. Okay, in living organism, some are bacteria, some are viruses, and so many they are living organisms. So they are all having the RNA and DNA. So RNA and DNA, they also contain the ribosome, nucleic acid. Okay, so everywhere you can see the chemistry. So that's why it is very important to study this chemistry. So this is our second question is that why to study the chemistry? So this is the important. Okay, then how to study? This is a very great issue for us.
then very great question for everyone. How to study chemistry? So this question you will be learned through this lecture. Okay, I'm not giving answer to this question how to study, because no one can give the answer to this question how to study. Study कैसे करना है chemistry का? No one can give the answer for this question, because everyone they study according to their own way. है ना, हर किसी का अलग अलग वे होता है उसको स्टडी करने का. But in this lecture, but in this total chapter, we are going to be learn how to study the chemistry. Okay, because how to study, this is not a one sentence answer. This is the practical answer. So for that, I told to you in every lecture about every topic how to prepare it. Okay, हर लेक्चर में एक एक टॉपिक को किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, किस तरह से आपको स्टडी करना है, that I will going to be taught you. So that's why you join every lecture and listen every word carefully. And one thing more important is here, whatever you learn today, है ना, हम आज जो पढ़ रहे हैं, whatever you learn today in my lecture or any person, any lecturer, तो क्या है जो हम आज पढ़ रहे हैं, तो that will be you have to apply in the next lecture, है ना. मतलब जो हम आज पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन राइज हुआ है कि हाउ टू स्टडी, स्टडी कैसे करना है, बट इसका आंसर तो इस लेक्चर में नहीं मिलेगा. इसका आंसर आपको आने वाले कई लेक्चर में थोड़ा थोड़ा आंसर मिलता रहेगा. And then finally when you complete this chapter, you will understand, you will get the answer of this question, how to study the chemistry. Okay, so that much important to you, you should have to attend every lecture, and whatever I taught to you, you have to read at your home. Okay, you have to refer your textbook, you have to refer different reference books, okay, regarding to your topic. And also you can go on the website, you can see the various website, you can use the different YouTube videos and different link regarding to your topic, regarding to chemistry, and you can understand this topic in very well. Okay, so we must know what is atom, molecule and compounds. Okay, so when we are going to study the chemistry, you should have to know about the atom, molecule and compound. ठीक है, तो देखो यहाँ पे एटम जो होता है, एटम क्या होता है, इनडिवाइडेबल पार्ट ऑफ द मटेरियल, है ना. जिस पार्ट को हम और डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिवाइडेबल पार्ट ऑफ द मटेरियल, तो उसे कहेंगे हम एटम. ये तो सब लोगों को पता है, बट देयर इज सो मेनी नंबर ऑफ एटम, 119 atom inputted into the periodic table from a long time. So you can see here, basically 4 component of the world or universe is unique: air, water, earth and solid. Air, water, earth, and 4th one is fire. Okay, so you can see this all component, and every particle, every matter of the world, it is made up by this 4 particles. Even our body is also made up by this 4 component. Okay, and this 4 component is made up by using this all elements from the periodic table. Okay, air, water, earth and fire, these all are components are made up by the different combination of the atom from the periodic table. So you know very well about the periodic table, who discovered, how the complete this total periodic table. Okay, there are some natural elements, some are synthetic elements, elements or simply atoms you can say it, and they are incorporated in this periodic table. ठीक है, तो ये periodic table में जो है ये सारे atom हम inorganic में इसको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे कि किस तरह से होता है ये periodic table, किस तरह से बना है ना. But if you are going to study the chemistry, so there are 3 classes of the chemistry, basically organic, inorganic and physical. ठीक है, तो आप लोगों का जो सिलेबस है इसमें भी 3 पार्ट में 2-2 यूनिट दिए हुए हैं. ऑर्गेनिक के 2 है, इनऑर्गेनिक के 2 है, या और फिजिकल के भी 2 उसमें आपको चैप्टर देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसको हम स्टडी करने वाले हैं इसमें. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट
जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो सारी चीजों जो हम यहाँ पे समझ रहे हैं, जो कि रिएक्शन है, बॉन्ड है, ये सारी चीजें क्यों हो रही है? दिस ऑल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक के डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से ही ये सारी चीजें को हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो ब्रांचेस है जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, तो इसमें हम ऑर्गेनिक स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो किस तरह से डिफाइन करते हैं, पहले तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? तो ये जो डेफिनेशन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ये वैरी होती आई है, या इट इज कम टू बी अपग्रेडेड आफ्टर सम टाइम। ओके, तो ये जो है अपडेट हुई हुई डेफिनेशन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ये यहाँ तक हम जो है अभी जो डेफिनेशन देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, द कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। ओके, द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, this is another advanced definition of organic chemistry, but in ancient era है ना, जब हम पहले देखते हैं कि अपनी ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को है ये कैसे डिफाइन करते थे, तो उस टाइम में क्या होता था कि द कंपाउंड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, तो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा गया। बट क्या हुआ बाद में, दिस टर्म इज कॉइन्ड बाय द जॉन जैकब बेrzelius in 1807 in this डॉक्ट्रिन विटालिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्टडी ऑफ मैटर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हुआ था। फिर 1828 में, मतलब आफ्टर 21 ईयर, ओके, फ्रेडरिक वोलर नाम का साइंटिस्ट आया। उसने क्या किया, यूरिया को सिंथेसाइज किए लैब में फ्रॉम द अमोनियम साइनेट। तो ये जो अमोनियम साइनेट है, अमोनियम साइनेट को यूज करके फर्स्ट अपॉन this Frederick Wöhler was synthesized urea in laboratory. Okay, so this is the first organic molecule said on that time, known on that time. Screen दिसत आहे सगळ्यांना? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. 1 minute. जस्ट मिनिट, थोड़ा शेअरिंग मध्ये प्रॉब्लेम येतोय, एक मिनिट। तो आय थिंक आपला लेक्चरचा टाइम झालाय, तुमचं दुसरं लेक्चर असेल, आपण इथे थांबूया। ठीक आहे, आणि नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण परत इथनं कंटिन्यू करूया। ओके, आणि तुम्हाला काही क्वेश्चन असेल तर तुम्ही विचारू शकता। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, किसी को अगर कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के बारे में तो आप पूछ सकते हो। ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू साइड? ओके, कोणाला काही प्रश्न नाही? ठीक आहे, क्वेश्चन नसेल नेक्स्ट टाइम जेव्हा लेक्चरला याल तेव्हा काही क्वेश्चन असेल तर तो घेऊन यायचा, आपण इथे डिस्कस करूया आणि मग लेक्चर स्टार्ट करूया। आणि हा जो टॉपिक आहे हा तुम्ही रीड कराल, ठीक आहे।